Hi guys, welcome or welcome back to my channel. So today I'm going to review this foundation. The foundation is Lakme 95 Primer plus Matte Perfect Cover Foundation. मेरा आज का ये इन डेप्थ रिव्यू इस फाउंडेशन के ऊपर अगर अच्छा लगे या हेल्पफुल रहे तो फिर डेफिनेटली मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फिर सबसे पहले इसके पैकेजिंग की बात करते हैं। सो इट डजंट कम्स विद अ आउटर कार्डबोर्ड काइंड ऑफ अ बॉक्स लाइक इस तरह से डायरेक्टली कुछ इसका एक पैकेजिंग है जो कि एक ग्लास बॉटल में आता है विच हैज़ शाइनी काइंड ऑफ अ मेटेलिक cap, and the packaging reminds me of Lakme Invisible Finish Foundation, but इसका जो inner packaging है guys मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया because it doesn't comes with a pump, like it has spatula kind of a stick here जो कि like I'm not a big fan of spatula, but at least it's बेटर देन दैट कि आप अपने हाथ पे पोर करो और यूज़ करने के लिए। सो स्पेचुला फिर भी ठीक है, बट या आई थिंक फाउंडेशन मेरे को वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं जिसमें पंप आते हैं। वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है यूज़ करने के लिए और काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल फ्रेंडली भी होता है। ओके, सो दिस फाउंडेशन रिटेल्स फॉर 475 रुपीज़ और इन दिस यू गेट 25 ml ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ अ गुड थिंग आई थिंक बिकॉज इट्स प्रीटी डिसेंट एंड अफोर्डेबल अकॉर्डिंग टू द क्वान्टिटी एंड टू द रिटेल प्राइस। सो मेरे को प्राइस काफ़ी अच्छा लगा और मोस्ट ऑफ द टाइम यू गेट दिस ऑन डिस्काउंट ऑन ऑनलाइन। सो गाइस वी नो कि लैक्मे की जो शेड रेंजेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होते हैं, लाइक फेयर काइंड ऑफ शेड्स वो लोग रखते हैं और कुछ लाइक 4 to 5 शेड्स ही रखते हैं, बट दिस फाउंडेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन 16 डिफरेंट शेड्स विच इज़ like a great thing for me. Like I know 16 shades it's not a wow for Indian skin tone, but the fact that Lakme actually have shades like a darker shades kind of for Indian skin tone is very appreciable for me. They only running towards to like cooler to neutral tones, but they messed up a lot of warm undertone which caters to many Indian skin tones, guys, like they need to work on it. So in this foundation I'm in the shade W240 warm beige. So this shade, it's not perfectly matched to my skin. It's little like a one shade lighter to my skin tone because मैंने ये जानबूझ के ही इस शेड को पिक किया बिकॉज मैंने कुछ ऐसे रिव्यूज़ देखे हैं कि थोड़ा सा ऑक्सीडाइज करता है थोड़ा सा। सो मैं आगे आप लोगों को टेस्ट करके ज़रूर दिखाऊंगी कि कितना ऑक्सीडाइज करता है। सो ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज करता है, दैट्स वाई मैंने इसको एक अपने शेड से एक शेड लाइटर शेड पिक किया है। लेट्स टॉक अबाउट द टेक्स्चर ऑफ दिस फाउंडेशन। इट्स रियली ऑन द मैटिफाइंग साइड, नॉट so matte, like it gives you a demi matte finish, but after a minute it's properly looks like a matte foundation on your skin. So if you have really dry skin or a combination skin, so you really need to moisturize your face so well ताकि आपके फेस पे बिल्कुल भी पैची या ड्राई फ्लेकी सा ना लगे। आपको बहुत अच्छी तरह से अपने फेस को मॉइस्चराइज करना पड़ेगा, देन आप इस फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हैं। बट नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा आपको कवरेज और बहुत ही अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर सकते हैं आप। सो या टेक्स्चर इस तरह से है, लाइक बहुत ज़्यादा रनी फॉर्म में भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी भी नहीं है इसका। इट्स समथिंग इन बिटवीन काइंड ऑफ अ टेक्सचर, लाइक थोड़ा स्मूथ क्रीमी सा टेक्सचर है इसका जो कि बहुत ही ईजीली स्मूथली और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से ब्लेंड होता है स्किन पे। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, सो काफ़ी ज़्यादा वेटलेस काइंड ऑफ अ फिनिश प्रोवाइड करता है फेस पे इसको अप्लाई करने के बाद। आई रियली वांटेड टू सी हाउ दिस वर्क्स लाइक इन अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, लाइक अगर आप फिंगर से अप्लाई करते हैं, अगर आप ब्यूटी स्पंज से अप्लाई करते हैं या फिर अगर ब्रश से आप अप्लाई करते हैं तो ये किस तरह से वर्क करता है। लाइक मुझे सीरियसली ये चीज़ चेक करना है कि क्या इस फाउंडेशन को यूज़ करने के लिए कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट का नीड है या हम किसी भी चीज़ से इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे। पहले जो एप्लीकेशन मैं टेस्ट करने वाली हूँ वो है फिंगर से फाउंडेशन किस तरह से ब्लेंड करते हैं। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज़ माई फिंगर्स टू ब्लेंड एंड अप्लाई दिस फाउंडेशन। सो हियर आई एम स्टार्टेड टू पैटिंग अप दिस फाउंडेशन डायरेक्टली ऑन टू द स्किन, and patting up with your fingers works really well. It looks little cakey and heavy onto your skin. Then I'm started to rubbing it gently in circular motion, and
guys, guess what? It started blending out so well and it looks much better than patting up your foundation with your fingers. So guys, if you are using your fingers, actually the finishing looks pretty good. It doesn't look cakey at all. For another form of application, I'm trying to use brush and beauty sponge to blend out my foundation. So first here I'm using a brush one half of my face, and guys, it actually applied really easy and gives really smooth finish. And on the another half of my face, with the help of sponge, how I have felt it blended out easier and looks more perfect and natural than the brush side, guys. So guys, it claims that it comes with a primer plus matte foundation. So I really wanted to see this कि ये किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से ये दिखने में लगता है कि अगर मैं इसको प्राइमर और विदाउट प्राइमर इस फाउंडेशन को वेयर करती हूँ. For a primer test, here I'm using a Lakme Absolute Blur Perfect Primer. It's a tinted primer and it fills the pores so well. So guys, for this primer test, I'm going to using this primer only one half of my face because I really wanted to see how this foundation works and looks with or without primer underneath this foundation. So मैंने सिर्फ प्राइमर के ऊपर एक ही साइड पे इस फाउंडेशन को ब्लेंड किया है और दूसरे साइड पे कोई भी प्राइमर नहीं अप्लाई किया है. And guys, what I did notice that it looks little smoother and the pores are less visible than that the another side. So it looks pretty good with or without primer, guys. However, this foundation doesn't exaggerated your pores, but मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इस फाउंडेशन को अप्लाई करना चाहते तो विदाउट प्राइमर भी ये फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं. काफ़ी अच्छा प्रीटी डिसेंट लगता है. बट अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लार्ज पोर्स है देन यू नीड टू अप्लाई अ गुड अमाउंट ऑफ प्राइमर टू फिल योर पोर्स. अदरवाइज़ ये आपके फेस पे थोड़ा सा क्लिंकी सा दिख सकता है और आपके फेस पे ब्रेकआउट्स भी दे सकता है. सो अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लार्ज पोर है देन आप पहले प्राइमर अप्लाई करें देन इस फाउंडेशन को अप्लाई करें. अदरवाइज आप इस फाउंडेशन को विदाउट प्राइमर भी अप्लाई कर सकते हैं. So guys, it claims that the foundation is a buildable coverage foundation. So I really wanted to see how it looks after the second layer of foundation. So for that, here I'm using a first layer of my foundation and then I'm applying a second layer of my foundation over it. And guys, it blends so well, and guess what? It didn't look too cakey, which is a good thing I feel because it's so affordable and it's a matte foundation, but it didn't look cakey at all. Like, it looks little heavy, but after a minute it looks so flawless onto the skin. And according to me, it's a perfect buildable coverage foundation which gives you a medium to high coverage. And also I did a transfer proof test. For that, here I'm using a white cloth napkin and I started patting up this napkin onto my skin with a light hand, and guess what? It didn't transfer at all, guys. So now let's talk about the longevity of this foundation. Now I wore this foundation from few days ago to test this out foundation, like कितने time तक ये stay करता है, इसका staying power क्या है. And I'm shocked, guys. It stays for so long. It actually stays for 7 to 8 hours with a good coverage, and the finishing looks so pretty on the face. So guys, I did a wear test also, and after 2 hours the coverage and the finishing looks so good. And also I showed this clip in a natural daylight. As you can see, the coverage and the finishing looks so good in a natural daylight. It looks so perfect and so fresh. So I really love the finishing in a natural daylight also. And after that I shoot this clip after a 6 hours. So after 6 hours, it little creasing around my mouth and eye area, but it's a natural thing and it didn't gives you any greasy oily look, which is I really loved it. It looks so flawless after a 6 hours. सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा, इसका कवरेज बिल्कुल परफेक्ट था. हाँ, थोड़ा बहुत ये क्रीज होता है लाइक अपने आइज़ के एरिया पे, अराउंड द माउथ एरिया, बिकॉज ये हमारी नेचुरल क्रीजिंग लाइंस है, ये हमारी लाफिंग लाइंस है, तो यहाँ पे नॉर्मली क्रीजिंग होता ही है, बट बहुत ज़्यादा क्रीजिंग नहीं हुआ, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर मी.
So guys, I did a oxidized test also. So for that, here I'm applying a single swatch of foundation on my wrist for 3 hours, and after the 3 hours I applied a fresh coat of foundation along with that swatch. So as you can see here, यहाँ पे बहुत ज़्यादा changes नहीं है, like 10 में से 2% सिर्फ change है, और इस तरह का change यूजुअली सारे फाउंडेशन में होता है, सिर्फ टोनल चेंज है. सो इट डजंट ऑक्सीडाइज easily and too much guys, which is a good thing. So guys, it claims that it has SPF 20 also. So मैं जितना जानती हूँ कि जिस मेकअप प्रोडक्ट में SPF होते हैं वो थोड़ा बहुत फ्लैशबैक देते हैं. बहुत से प्रोडक्ट है जिनमें SPF होता है बट वो फ्लैशबैक नहीं देते हैं. सो आई रियली वांटेड टू सी कि ये फ्लैशबैक हमें देता है कि नहीं. सो यहाँ पे आपको पिक्चर मिल जाएगा साइड पे कि ये फ्लैशबैक देता है कि नहीं. एंड मैंने जब इसका फ्लैशबैक टेस्ट किया था गाइस, मेरे को इसमें थोड़ा सा भी फ्लैशबैक नहीं मिला. हाँ, थोड़ा सा टोनल चेंज्ड है बिकॉज वो हर फाउंडेशन में होता है. जब भी हम पिक्चर्स लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा फाउंडेशन का शेड डिफरेंट लगता है. बहुत ही लाइक इंच टाइप का आपको इसमें टोनल चेंज दिख रहा होगा फाउंडेशन शेड का. अदरवाइज इन दिस फाउंडेशन देयर वाज नो फ्लैशबैक. ओके गाइस, नाउ दैट्स इट. लाइक इतना ही मेरे को रिव्यू में बताना था. लास्टली मैं आप लोगों के साथ इसके कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स शेयर करूँगी. लाइक अभी तक मैंने इसको जो वेयर टेस्ट किया एंड इससे पहले भी मैंने इसको वेयर टेस्ट किया, बहुत सारी चीज़ें को देख के मैं आप लोगों के साथ मेरे सारे प्रोज एंड कॉन्स शेयर करना चाहती हूँ. तो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ सारे प्रोज शेयर करूँगी एंड देन आप लोगों के साथ कॉन्स शेयर करूँगी. प्रो नंबर 1 इज लैक्मे इज ईजिली अवेलेबल ऑन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टोर. Pro number 2, it's pretty affordable and most of the time you get a discount on an online site. Pro number 3, finally Lakme gives us more 16 shades. I know 16 shades, it's not good factor for Indian skin tone, but at least they tried, okay? Pro number 4, this foundation works really well with fingers, beauty sponges and brushes, which means you don't need any particular equipment to apply this foundation. Pro number 5, it's a buildable coverage foundation, like it gives you a medium to full coverage. Pro number 6, it doesn't look cakey onto your face. Pro number 7, it doesn't oxidize easily. Pro number 8, it doesn't transfer. Pro number 9, it's a weightless finish foundation. Pro number 10, it doesn't crease easily. Pro number 11, it lasts really long for like 7 to 8 hours. Last but not the least, pro number 12, it doesn't gives you any flashback. It's time for the cons. Con number 1, it doesn't have any pump. I know it had spatula kind of a stick, but I didn't like those kind of a foundation which doesn't comes out with any pump. Con number 2, it's slightly drier for dry skin to combination skin people. So if you have a dry skin, please make sure moisturize your face so well and then apply this foundation. Con number 3, shades are really limited guys. They need to work on it. They need to add some more warm undertone for medium to dusky skin girls. अगर आप जानना चाहो मैं इसको recommend करूँ कि ना, so yeah, I really wanted to recommend this to all. Like if you are a beginner, if you are a pro, if you are a professional, you have to try this. So yeah guys, that's it for today's video. I hope कि आप लोग को मेरा आज का ये रिव्यू अच्छा लगा होगा. इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा. कमेंट करके बताना वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है. सो मिलती हूँ नए वीडियो में नए तरीके के साथ. तब तक के लिए मैं से मेरी स्टे होम, स्टे सेफ. बाय बाय.